Good morning, my dear pupil teachers of B.Ed second year. The subject is Pedagogy of English, and the topic today is basic concept of remedial work. And the teaching points are the first diagnostic test, second basic concept of remedial teaching or work, teaching or work, and number third, program for remedial teaching. Now come to the first point, that is diagnostic test. What is diagnostic test? Each student is different in term of learning. Some are very able, some are weak, some are working very hard but cannot understand. So it depends on their capacity of understanding. It is duty of teacher to find out the areas in which individual student is weak, where student is weak. It is duty of teacher. And how can he find out this thing? For this, teacher should arrange a test, and this test is called diagnostic test. Nidanatmak parikshan. Diagnostic test. A good diagnostic test shows. What does a good diagnostic test show? This is a question. So, a good diagnostic test shows the correct picture of students lacking का मतलब कमी, lacking in achievement. किस में उपलब्धि में कमी रही उसकी, lacking in achievement. According to it, a good teacher arrange extra teaching, and this extra teaching is called remedial teaching. निदानात्मक शिक्षा, निदान और उपचारात्मक शिक्षा, रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षा. Now second point, basic concept of remedial work. What is the basic concept of remedial work? Now all people are different in learning capacity. Some people work very hard, even then they cannot get the achievement. So, remedial work is needed for those who have poor learning ability and their performance is below average standard of the class. Some students work hard, but they fail. They cannot get the required level. Why? Because their learning ability is weak. उनका दिमाग कमज़ोर होता है. इसलिए उनके लिए जो है टीचर को क्या करना चाहिए? फिर it is duty to their poor grasping ability. It is due to their poor grasping ability. ग्रहण करने की शक्ति उनकी कमज़ोर है. टीचर पढ़ा रहा है, ईमानदारी से पढ़ा रहा है, मेहनत कर रहा है, but their grasping power is weak. The aim of remedial teaching is to provide learning support to pupils who lag behind. Lag behind का मतलब जो पीछे रह गए हैं. Lag behind by adopting school curricula and teaching strategy. Strategy का मतलब planning, रणनीति. तो टीचिंग की रणनीति बनाएं. Teachers can provide a learning activity and practical experience to students according to their ability. जितना ability है उसके अनुसार उसको एक्स्ट्रा मेहनत कराएं and their need, और उसकी आवश्यकता क्या है. According to their ability and according to their needs, the extra teaching should be arranged. They can also design का मतलब बनाना, arrange करना.
They can also design individualized education program with intensive remedial support. इंडिविजुअलाइज यानी एक एक बच्चे को देखे कि ये बच्चा क्या किसमें कमज़ोर है, कहाँ कमज़ोर है, इसकी वोकेबलरी कमज़ोर है, स्ट्रक्चर कमज़ोर है, टेंस नहीं आते, तो इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम आयोजित करें. एंड फ्रॉम दिस रेमेडियल टीचिंग पीपल गेट हेल्प and consolidate their basic knowledge. Consolidate का मतलब इकट्ठा करना, to collect, सारा दिमाग में इकट्ठा करना. Gather in the mind their basic knowledge in English subject. Master the language learning method. Language learning method हैं, उनको भी सीखे किस तरह से इंग्लिश सीखा जाए, उन मेथड को सीखे जिससे सो दैट देयर फंडामेंटल बेसिक जो है नॉलेज विल बी इंक्रीज. स्ट्रेंथन देयर कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ी बात है टू स्ट्रेंथन देयर कॉन्फिडेंस. स्ट्रेंथन का मतलब टू मेक स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाना, उनके कॉन्फिडेंस को मजबूत बनाना. ऐसा कि तुम कर सकते हो, ये बात नहीं है कि तुम नहीं कर सकते हो, भले दिमाग कमज़ोर है फिर भी तुम अचीवमेंट कर सकते हो. तो इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट्स एंड एनहेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग. और सीखने की जो तरीका है उसको एनहेंस करें, तेज करें. नाउ थर्ड पॉइंट इज प्रोग्राम फॉर रेमेडियल टीचिंग इन इंग्लिश. थ्रूआउट द रेमेडियल टीचिंग, थ्रूआउट का मतलब पूरे रेमेडियल टीचिंग के दौरान प्रोसेस, टीचर शुड प्रोवाइड सिस्टमैटिक ट्रेनिंग टू डेवलप पीपल्स जेनेटिक स्किल. जेनेटिक स्किल का मतलब जन्मजात हर व्यक्ति के अंदर कुशलता होती है लेकिन उसको डेवलप करना पड़ता है. एवरी पर्सन हैज बोर्न क्वालिटीज but it should be developed through the good training. So genetic skill including interpersonal relationship, लोगों के साथ कैसे मिलना है, क्योंकि these are the aspect of language. Communication, संवाद कैसे स्थापित करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अपनी समस्या को खुद ही कैसे समझा सुलझाएं, सेल्फ मैनेजमेंट, अपना खुद का प्रबंध कैसे करना है, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ लर्निंग. सेल्फ लर्निंग इज द बेस्ट लर्निंग. नोबडी कैन मेक यू अंडरस्टैंड सो मच एज यू कैन अंडरस्टैंड योर सेल्फ. सेल्फ लर्निंग, ये यदि आदत पड़ जाए तो व्यक्ति कमज़ोर नहीं रहेगा. सेल्फ लर्निंग, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी, सृजनता, बनाना, निर्माण करना, क्रिएटिविटी एंड द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करो. मोबाइल रखते हो तो उसके अंदर नेट है तो सारी इंफॉर्मेशन उसमें है, उसका यूज करो, उससे सीखो टेक्नोलॉजी. सच ट्रेनिंग कैन ले का मतलब रखना. तो ऐसी यदि बच्चे को ट्रेनिंग दी जाए तो सच ट्रेनिंग कैन ले द फाउंडेशन, यानी नींव रखेगा. ऐसी ट्रेनिंग बच्चे में नींव रखेगा फॉर पीपल्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग. वो जो सीखेगा जीवन पर्यंत याद रहेगा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होगा. हेल्प देम डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, और अपना रवैया जो है पॉजिटिव बनाएं. सीखना है तो टीचर से नम्रता से पेश आएँ, हर बात में जो है एटीट्यूड सीखें, कल्चर कर्टसी सीखें. एंड वैल्यूज, प्रिपेयर देम फॉर द फर्दर स्टडीज एंड कैरियर, और अपने आप को आगे के कैरियर के लिए तैयार करें. दीज आर द रेमेडियल टीचिंग्स एम. Now there are some questions for you. Assignment. Question number was, what does a good diagnostic test show? A good diagnostic test shows the correct picture of students' learning achievement and who are lagged behind from the average standard that is shown by the diagnostic test. What is the other reason of students' weakness other than carelessness?
Some students are not careless, they are hardworking, but due to their weak understanding, their weak mind, they cannot get the required level of learning. So, in spite of teachers' good teaching, in spite of the students' hard working, even then some students fail, some students cannot get the required level. It is due to their genetic weakness. How can teachers support weak students through individualized education program? This individualized program के द्वारा कैसे जो है किया जाए? And last question is, what positive change can English teacher bring in students through remedial teaching? Remedial teaching के द्वारा क्या change ला सकता है? Such training can lay the foundation for the people's lifelong learning, help themselves, positive attitude and values, and preparation for the further study and further career. In this way, you have to answer these questions so that you will understand my chapter, my lecture correctly. Now there is some advice for you that due to this corona epidemic, as far as possible, don't leave your house, stay at home. And even then, if some unavoidable work comes, you should go out after wearing the mask and keep 6 feet at least distance from person, and just after returning, first of all wash your hands with soap or sanitizer, and then you can take water, food, etc. Okay. Have a